अगर मैं सोच रही थी 14 साल में ना तो यूनिकॉर्न बनी, ना तो सोनिकॉर्न बनी, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न हूँ, मगर आई एम अ लव कॉर्न। आई वांट टू बी अ पर्सन कि आज अगर मर जाऊं रात में तो ये ना हो कि 100 चीज चेकलिस्ट था, वो हुआ नहीं, तो मेरी भूत तड़पेगी। आज के एपिसोड में मेरे साथ है श्रद्धा शर्मा, जो आप सब लोग जानते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, द फाउंडर ऑफ योर स्टोरी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी और इंसान है जिसने इंडिया की स्टार्टअप जर्नी को इतने अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है, विटनेस किया है एज मच एज श्रद्धा एज। So thank you so much, Shradha, for joining us today. It's a pleasure to have you on this conversation. Ankur, I am very excited to be talking to you because you talked about cover kiya hai. I've had the privilege of seeing the journey, and we're just talking the journey that you have made, and it's always nice to talk to people who've made in a journey, and thank you for this opportunity. Thank you for again. So I want to start with this question, Shradha, जो मैं अपने guest से अक्सर पूछता हूँ. Go back to your childhood and tell me, how was it growing up, especially when it came to money? Did you grow up with a lot of money, without a lot of money? And how did that shape up your early relationship with money? Oh, wow, this is an interesting question. So, Ankur, it's a very tough क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज जैसे बहुत सारे लोगों का होगा, मेरा भी वैसा ही है कि बहुत ही स्किज़ोफ्रेनिक रिलेशनशिप मनी से रहा है. जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, माय फादर वाज इन मर्चेंट नेवी. तो हम पटना में ग्रो किए, एकदम हार्टलैंड ऑफ पेट्रियार्की, बिहारिज्म एंड एवरीथिंगिज्म, वेयर द चीफ मिनिस्टर दैट टाइम वाज लालू प्रसाद यादव. इट वाज अ वेरी डिफरेंट एरा. और उस समय मेरे फादर मर्चेंट नेवी में थे, तो वो और इंटरनेशनल कंपनी में काम करते थे, तो पैसे कमाते थे. बट एट द सेम टाइम, एज ही व्हेन ही केम बैक, द मनी यूज्ड टू जस्ट डिसअपियर, क्योंकि उनको एक लाइफस्टाइल था, एक मतलब यू नेवर न्यू. तो द ओनली थिंग इज दैट मेरे अंदर एक पैरानोया था, और मेरे अंदर एक फियर था दैट I don't want to be moneyless. सेकेंड इज इफ यू आर ग्रोइंग अप एज अ वुमेन इन बिहार. जब हम ग्रो किए, मैंने बहुत जगह ये बोला है, हम 4 सिस्टर्स थे, तो जब भी कोई घर पे आता था तो कहता था, शर्मा जी 4 बेटी, डाउरी देनी पड़ेगी. एंड मेरे अंदर हमेशा ये लगता था कि वो मेरे, व्हाई शुड आई बी अ लाइबिलिटी. तो मेरा रिश्ता पैसे से हमेशा आत्मनिर्भर का था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव माई ओन मनी. लाइक आई, मतलब किसी के मोहताज नहीं रहे, किसी सुनना ना पड़े. मतलब and yeah, but at the same time, yes, money like बहुत बड़ी चीज होती थी. कभी कभी सपना भी आता था कि एक मुझे सुरंग में पैसा मिल जाए और मेरे घर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बिकॉज आई नेवर न्यू व्हाई माय पेरेंट्स यूज्ड टू हैव सो मच ऑफ फाइट्स बिकॉज ऑफ मनी. मतलब खुददारी जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, कि अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी पैसे की वजह से कम नहीं होना चाहिए. तो इस डर ने आपसे क्या करवाया, श्रद्धा? Like what were the few things? दौड़ाया. मिल्खा सिंह नहीं बन पाई, मगर दौड़ी बहुत. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पटना से इस चेयर कार में, एसी चेयर कार में बिना टिकट के वेंट टू दिल्ली, क्योंकि मुझे सेंट स्टीफेंस में पढ़ना था, और मुझे था कि वहां पे जो पढ़ते हैं वो रिच होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत बड़े बन जाते हैं. तो पता नहीं, कुछ नहीं था बिहार में, बट आई न्यू आई हैड टू डू दैट. तो मुझे अभी भी याद है, मेरी मदर नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कोएड था, बर्बाद हो जाओगी, बिहार में रहो. मुझे पता था बिहार में मैं बर्बाद हो जाऊंगी. तो ट्रेन पकड़ के दौड़ी और एडमिशन लिया, इंटरव्यू दिया. आई स्टिल रिमेम्बर लैंडिंग इन दिल्ली एंड डूइंग थिंग्स, एंड आई थिंक आई हैव बीन ऑन दैट रन, दैट कि कि कभी डिपेंडेंसी नहीं हो, बिकॉज अंकुर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ chaos, fight and trauma that happens because of money. As in, some of the things I wouldn't like to say, but नहीं होता है तो बहुत. I want to be that rich person ना, जो कहे money doesn't matter. I want to reach that state कि इतना ज्यादा पैसा हो कि मैं भी कहूँ कि money doesn't matter. As of now, it matters. कितनी दूर है आप उस स्टेज से? Okay, to be genuinely honest with you,
I have realized that actually money doesn't matter. आज पहुंच गई स्टेट में, not because I have that money, क्योंकि मेरी मदर बहुत ही ट्रैजिक ढंग से उनका डेथ हुआ, एंड मैं बहुत कोशिश की, पैसे स्पेंड किए कि जी जाए, मगर वो नहीं जी सकी. एंड दैट वाज टू मी 10 साल 12 साल पहले द बिगेस्ट रियलाइजेशन कि पैसे हो के भी कुछ नहीं हो सकता है. एंड दैट आई थिंक गेव मी अ सेंस ऑफ अबैंडन, क्योंकि उस समय में मेरे पूरे लाइफ का जर्नी था टू मेक माय मदर हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी, एंड शी पास्ड अवे एंड नो मनी, नो नथिंग, नो थिंग कुड सेव. तो फिर अब नहीं लगता है कि पैसा रीढ़ की हड्डी रहे, बट मनी टुडे डजंट एक्चुअली मैटर. And now the drive is what? Like ये होता है ना कि इंसान में हमेशा कोई ना कोई डर तो होता ही है जो उसको दौड़ाता रहता है. जैसे बचपन में आपके लिए पैसा था, अब पैसा नहीं है, लेकिन अब क्या डर लगता है? आप पता है, डर नहीं लगता. नहीं. वाह वाह. Tell me more. क्योंकि और ये भी कह रही ना, विपासना करके आई, मतलब छोटी छोटी चीजें से डर लगता था मुझे. जैसे मेरी मदर को मैं पटना से फ्लाई करके एयर एम्बुलेंस में लाई बॉम्बे, तो उसके बाद मेरे अंदर डर हो गया फ्लाइट फोबिया. आई एम टर्बुलेंस से मुझे डर लगता है, डेथ से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है. मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, इज अ क्विंटेसेंशियल क्वेश्चन दैट आई कीप ऑन आस्किंग. एंड लाइक माई ब्रदर है स्किज़ोफ्रेनिया, तो मैं सोचती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चलता होगा, वो कैसे रहेगा, इफ आई एम नॉट देयर हाउ विल ही सर्वाइव. बहुत चीजों से, मेरे फादर के हेल्थ को लेकर, बिकॉज ही वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, तो बहुत चीजों को लेकर अब नहीं लगता है, क्योंकि समवेयर विपासना मेड मी realize the disintegration of mind and body, not at a theoretical level, but मैंने experience किया. और अभी completely नहीं गया है, मगर अभी मुझे death से नहीं डर लगता है. और एक one of the things I think कि बहुत, जब आदमी बहुत ज्यादा दुख झेलता है ना, तो वो हो जाता है, पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ मसल डेवलप हो जाता है कि फिर you know what's the worst that can happen. So now I'm operating from what's the worst that can happen, and I think that is a liberating space. That is a liberating space. I have to tell you this, Shradha, and I don't think you know that as intensely as you should. There are a lot of women in India that draw courage from your story. क्योंकि आपकी स्टोरी ना एक ऐसी स्टोरी है जो बिल्कुल प्रिविलेज से नहीं है, जो लक्स भी नहीं लगता है, कैपेबिलिटी भी नहीं लगती है, हार्ड वर्क है, इंटेंसिटी है, कमिटमेंट है, and most importantly, एक unbelievable level of patience to just continue doing whatever you're doing. Like I remember, I don't know when it was, 2007 or 2008, first time I saw you at IIT Delhi का कोई event था, and आप host कर रही थी वो event. And my first reaction was, who is she? Like somebody you were conscious of being on stage, yet wonderfully confident, and you held your ground there. And now I'm not surprised to see you where you are today. But you should know कि आपकी story, आपकी कहानी बहुत बहुत लोगों को inspire करती है in a way that you possibly don't fully understand. Do you feel that you have had it hard because you're a woman? First of all, thank you. I have to go on record that मुझे लगता है टाइम के साथ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो लोगों में होता है, हम अपने में इतने घुस जाते हैं कि दूसरे, बट यू have observed, and I have to call that out, that is one more trait about you, which one I'm sure people would know, but that's something I'm calling out, that stands out. क्या मेरी जर्नी हार्ड रही है क्योंकि मैं वुमेन हूँ? Yes, of course. Of course, हार्ड रही है क्योंकि मैं वुमेन हूँ at so many levels. Growing up हार्ड रही है. मुझे अभी तक पता है, हम स्कूल जाते थे और I never had a teenage life, क्योंकि हमेशा डर था कि don't get picked up, कुछ हो ना जाए. वो बहुत एक खौफनाक, एंड उस समय पता नहीं था कि ऐसे माहौल में जी रहे. That you just had to do this and study, and हमेशा कभी वुमेन के चलते, कभी बिहारी थे, कभी हिंदी ऐसा बोलते हैं, तो देयर वर डिस्क्रिमिनेशन एट मेनी लेवल्स, हर जगह, हर ये पे. द ओनली थिंग आई हैव डन इज दैट आई हैव
the things started changing for me when I started embracing. पहले मैं रोती थी, I was in the victim mindset. अब मुझे लगता है वो चौड़ी होके खड़ी हूँ, like तो मतलब क्या होगा, like, and that mindset I think takes time. It has taken, and to everyone watching, I would say it takes time. Like overnight, there's no success or strength or confidence formula. But itna zyada, I didn't get entry in the rooms, or people used to say, "Oh, she wouldn't know." Like one of the things I always think कि कोई हमेशा लोग कहते हैं your story, उनका 14 साल से चला रही हूँ, but question करना छोड़ दिया मैंने. Like my thing is that what is my purpose? How can I live happily? And because if I start looking at hardness, then there are a lot, and that's what I always tell women whenever I talk to them. Because if you start looking at anything and everything, then it is very hard. And will that be my story, or will I meet you as cool and confident and amazing and be happy and genuinely be happy, not because I'm meeting you, but be happy in every moment? And when you are that, then you spread that, and then I don't know, it gets manifested. So I don't know if I'm answering your question correctly. No, I get it. I understand and appreciate the sentiment fully. What makes you most happy? What gives you most joy? Genuinely, if you ask me, since childhood, and a psychiatrist told me recently, and I could make sense, is somewhere when you don't get, your voice doesn't get heard, you become empathetic to everyone else's voice. या तो हम बहुत विक्टिम होते हैं, या गुस्सैले क्रिटिक हो जाते हैं, या एम्पैथेटिक हो जाते हैं. शायद मैं एम्पैथेटिक हो गई. What gives me most joy is actually genuinely being there for people. Like I always tell people, I'm your 2 a.m. in the night friend. कभी crisis होगा, I feel greatest pride if you can call me. कि श्रद्धा को 2 बजे रात में कुछ भी बहुत crisis हुआ life में, I can call and she'll stand or do something the best. That gives me joy. Helping people as much as I can. Yeah. And I so relate to that actually. I genuinely do, क्योंकि help एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत लोगों ने मुझे मदद करी है when they had no reason to, and frankly they would never get anything out of it, and that just drives you to keep paying it forward in some way. कि अगर किसी ने मेरी मदद करी थी किसी वक्त पे, which changed a lot, then what if मेरी मदद से किसी की जिंदगी थोड़ी भी अगर improve हो सकती है, तो it's just immense joy. Are there people in your life that you can reach out for help and know that they will always help? Oh, there are so many, Ankur. That way I'm very blessed. और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर मैं सोच रही थी 14 साल में ना तो यूनिकॉर्न बनी, ना तो सोनिकॉर्न बनी, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न हूँ, मगर मेरे पास जो है is I'm a love con. I've got a lot of people loving and standing and helping. I can call people. People know that I won't screw them up. People can share things confidently. I can share things confidently. And to me, that's my biggest blessing in the journey I've made so far. Many. You do seem to be someone who would be the confidant of a lot of people. Yes. Is that true? I take great pride in that. Okay, that's my ego kick. Yeah. And do these come naturally? कि आप like if a friend is going through a tough time, then do you wait for them to reach out to you, कि आप initiative लेके उन पे check करती रहती हैं? You know, अंकुर, एक मूवी था ना सिक्स्थ सेंस करके, ब्रूस विलिस का. उसमें एक बच्चा था, वो भूत देख सकता था. मुझे लगता है दूसरों का पेन मैं देख सकती हूँ. मेरे पास ये ब्रह्मास्त्र है. I have a great, I was telling someone recently कि अगर someone asks me what job can you do, what's your skill set, I would say my skill set is to see the pain in people, and everyone carries some kind of pain or the other. The only thing about having pain in my life is I can see through, and hopefully once you're able to see through, like you were saying, right, you could observe me. When you're able to see through, then it's easy to reach out, and it's easy to connect at a very primal level with human beings. Bilkul. And there's no malice in that. There's no intent in just doing so. You're doing it out of just genuine concern. Makes sense. I want to talk about your day. What does your normal day look like? How would one observe Shradha if they were to observe from a distance? Right. Okay. So typical day when I'm in Bangalore is I get up very early in the morning by 5:30. Typically, I get up. I meditate for 45 minutes to an hour every day.
Vipassana, I used to do half an hour or 15-20 minutes, but now I do an hour a day. I spend time with my dogs. I have 2 Cocker Spaniels. Then देखती हूँ मेल ये सब क्या क्या है, what is the agenda for the day. Then I come to office, meet everyone. A lot of my time goes because there's a lot of requests that comes, a lot of connecting, a lot of helping, a lot of I wish मुझे पैसे मिलते उन सब चीजों के, but वही सब पूरे दिन करने में. And then also a lot of complaints come that you didn't do this, you didn't respond to that. Lot of anger comes from a lot of people because बहुत सारे आते हैं WhatsApp में, emails में, तरह तरह के requests. Then social engagements करती हूँ, जैसे somewhere if someone wants to me to do some session or something like that, तो उसमें time जाता है. Typical day ends, I don't know when it ends, but around 9-10 or whatever. There's no that thing. But I sleep peacefully, Ankur. To be very honest with you, बहुत अच्छी नींद आती है, कम आती है time से, but yeah, but I sleep well. And do you, what is the most undesirable part of your day? If you ask me today, I'll be very honest. Anything which has repeatability to it, now I have got bored of it. Like for me, पहले था कि यो स्टोरी लोग मजाक उड़ाते थे कि नहीं चलेगा तो उसको चलाना, टीम बनाना, प्रॉफिटेबल करना, अच्छी स्टोरीज करना, एक सब मतलब अब इफ यू आस्क मी, रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस डजंट एक्साइट. मतलब ये खुद चले, मतलब आई एम एन इम्पेडिमेंट टू माई कंपनी, आई फील. तो एनीथिंग विच बिकम्स रिपीटेबल, विच यू डन, आई लाइक टू डू कॉन्कर न्यू थिंग्स. योर स्टोरी इज द ओनली थिंग विच आई हैव डन फॉर 14 years. मगर लोग कहते थे कि राम भी वनवास 14 साल में आ गए वापस, तो शायद मेरा भी वनवास ये हो. आई होप आई गेट सम वेरी स्मार्ट लीडर्स हु नाउ टेक दिस फॉरवर्ड फ्रॉम माय टीम एंड आउटसाइड. सो या, दैट्स व्हाट I'm looking forward. And you still have a long, lovely life ahead of you. How do you visualize that? Are you a planner? आपको future plan करना पसंद है? एक जिंदगी में plan होना चाहिए, goal होना चाहिए, target होना चाहिए, और you're more of a fluid person की जो होता है आगे देखते रहेंगे? मेरी लाइफ में कुछ प्लान से हुआ ही नहीं अंकुर, तो पता नहीं प्लान कभी किया नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ. नथिंग वर्कड आउट एज प्लान, राइट? Like my life is, and then that's what I tell, that if I could survive and thrive or be happy, but the only thing I'm wanting, the only plan I have made for myself, commitment, जो मुझे आज मजा आ रहा है पिछले कुछ सालों से, कि मैं इनर जर्नी करना चाहती हूँ. मुझे वो लोग बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग स्टैटिक नहीं रहते हैं. और if the only plan I have is to spend a lot more time figuring out and decoding the internal me, because I just think that is something I would like to spend my time more. But other than that, there's no plan. I want to live in the moment. I want to be a person कि आज अगर मर जाऊं रात में तो ये ना हो कि 100 चीज चेकलिस्ट था, वो हुआ नहीं, तो मेरी भूत तड़पेगी. roaming around, ये नहीं हुआ. And but no, I want to live in the moment, that today, if tonight I pass away, I was good to people, I did my best, I was honest, I was kind, and I enjoyed. What does that mean, enjoying every moment? It's theoretically easy to say. How do you do that? Is what, yeah. Can you imagine yourself becoming a monk one day, or are you too attached to the real physical world? I would love to be a monk one day. Yeah, I would love to. I would love to be a monk, and I would love to embrace human beings, because I just think that कितना ज़्यादा पेन है, लेकिन कितने ज़्यादा, और हम अपने ही पेन के चक्रव्यूह में रहते हैं. तो जब तक अपना पेन नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक दूसरे का कहाँ से सॉल्व करेंगे. So yes. Wonderful. I have a very strong feeling that's going to happen. I don't know. Let's make a prediction today. On the 20th of September 2022, I have a very strong feeling that you're going to change people's lives in a way that you haven't yet imagined for yourself. And of course, in a wonderful way. Not that you haven't done it so far. I want to switch gears to work. I wasn't
kidding when I said कि मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग होंगे इस देश में जिन्होंने पूरी स्टार्टअप जर्नी इतनी क्लोजली विविडली ट्रैक करी है, फील करी है. You've been a part of it in conversations. I'm sure so many people confided in you in moments that they couldn't confide with anyone else. What do you think has changed the most in the attitude of entrepreneurs/founders in this country in the last 10 years? Very simplistic answer, Ankur, maybe I'm giving, but एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है. And I'm not saying, मतलब हर लेवल पे हम सब, like I meet youngsters, everyone would be confident in some way or the other, but there is a very different, unapologetic sense of who I am and what I'm doing. मतलब एक, there's a, that's a very markedly different I see in the last 12 years that I have been tracking the space. And second thing is that जैसे पहले हमारे अंदर बहुत ज्यादा मिडिल क्लास मेंटालिटी था टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल दैट. अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी सुपर रिच आर कमिंग, दे नाउ आल्सो मिडिल क्लास, बट इफ आई हैव टू गिव अ मेंटालिटी फ्रेमवर्क, बट आज वो मिडिल क्लास मेंटालिटी में एक रिच क्लास वाला एटीट्यूड है कि आई कैन डू इट. मतलब don't screw with me. Like, you would know that there was an era where entrepreneurs were giving 60% in angel round, 50-60% in angel round funding for few lakhs, and this and so many new things used to happen. I think it's become a lot more simpler. Entrepreneurs are far more aware. So वो change बहुत conspicuous है. Yeah, I would certainly agree with you. And given that you also have a lot of exposure in international markets, you are called upon to represent the country, to represent the ecosystem. What continues to be, यार काश इंडिया के फाउंडर्स में ये चीज होती जो बाहर आपको अक्सर दिखती है? US में दिखती है. I wouldn't say that much for Europe, or I wouldn't say as much for Southeast Asia, but I always get very impressed by the selling ability, articulation and storytelling ability of entrepreneurs in US, especially Bay Area में जो दिखता है, तो मुझे अभी भी दंग रह जाती हूँ. It's like meeting consulting guys, right? Like, I'm always impressed meeting all these top consulting firms. They're so articulate, they're so soft, and I feel that in Indian entrepreneurs, I still meet and I still feel बेचो अच्छे से अपनी story, to do a little better, and that I see as a very conspicuous difference still. Makes sense. Yeah, I would agree with that as well. I think इंडिया में ना for some reason एक ब्रांड और एक एसोसिएशन क्रिएट करना हमारे डीएनए में नहीं है. This thing is not ingrained in the way that we think, which is just the US is just always thinking brands, association, stories. How can I create this one thing and make it into something far bigger? Yeah, I so agree. And on the flip side, when you look at Indian founders, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत क्लियरली दिखती है जो बाकी देशों में आपको इतने अच्छे से नहीं दिखती? Something that sets us apart. तो biased रहूंगी इंडियन फाउंडर्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के तरफ, because I come from here. I think the struggle that we have to go in India as an Indian founders, the sociological construct around which we have to perform, not just the economic, not just the market, not just the capital, वो सब तो चलो ठीक है. मतलब उसमें हमेशा होता है ना प्लेग्राउंड. इंडियन फाउंडर को प्लेग्राउंड में एंटर भी करता है तो थोड़ा ईटा पत्थर भी हटाना पड़ता है, थोड़ा घास फूस भी क्लीन करना होता है और फिर खेलना होता है. देयर इंटरनेशनल प्लेग्राउंड में एक बहुत स्मूथ सा सरफेस मिलता है, एंड दैट टू मी इज समथिंग दैट आई वुड से मेक्स एन इंडियन एंटरप्रेन्योर मोर endearing and more perseverant for me. Yeah. Wonderful. आपने जब भी डिस्क्राइब किया मुझे अपने स्कूल की याद आ गई जहाँ एक फुटबॉल के पीछे कम से कम 50 बच्चे भाग रहे होते थे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि गोलकीपर कोई है, कोई फॉरवर्ड नहीं. सब लोग बस एक ही रोल को निभा रहे हैं और सब एक ही बॉल के पीछे भाग रहे हैं, और वही जगह थी एंड वही धूल में, वही मिट्टी में, वही ईंटों के साथ सब कुछ
No. Okay. Finally, closing up. How do you take care of your money today? Like, is there somebody who manages your money, or do you manage it yourself? No, I have a few people, like few people in the sense, people who advise me, and there is someone who manages money for me. How do I? अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है अंकुर आया. इस अगले साल ये सवाल ठीक से दूंगी क्योंकि I want to tell this, and again maybe through your platform I want to say this, and I don't know if it's a good thing or a bad thing, but you could be living a journey of so many years like me and be an entrepreneur without capital. राइट एंड क्योंकि सारा जो कुछ है मैं एक आई एम होपिंग दैट दे वुड बी अ सब्सटेंटिव एंड अ गुड आउटकम होपफुली टू योर स्टोरी एंड दैट्स हाउ आई विल क्रिएट वेल्थ एंड आई विल हैव मनी बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी बट yeah so that that is my answer. Now, all the best with that. I so relate to what you're saying कि लोगों को यही लगता है. मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, one of the worst reasons to become an entrepreneur is that you will make money. क्योंकि the probability of making money through this route is far lower than if you were to just stick in a job and just climb up the corporate ladder. लेकिन वही है, क्योंकि न्यूज़ मीडिया सर्वाइवरशिप बायस पे चलती है. So there is of course always this thing, अरे वाह फंडिंग, वो करोड़पति बन गए, वो अरबपति बन गए, वहाँ ESOPs खरीद लिए, ये हो गया, वो हो गया, बंगला, गाड़ी, शान शौकत. तो we just believe that that's the entire world, which is not. It's a very small part of it. What would you like to spend your money on once you have a lot of it? A lot of things. If you ask me, a very selfish interest that I have is I have a lot of selfish interest. मगर एक अगर personally कुछ करूँगी अपने लिए तो एक farmland लूँगी where I really would love to live in nature. Second is my brother is staying in a rehab here in Bangalore, schizophrenia का. They live hand to mouth. तो मैं चाहूँगी, और मैं देखती हूँ वहाँ पे girls, एक तो mental disorder होना, दूसरा women अगर girls को हो तो लोग छोड़ देते हैं अभी भी streets पे. And just because the pain, I have seen it so closely. I would like to create. India still lacks. I would like to contribute and care and create for mental health, क्योंकि एक लेवल का होता है rich लोग के लिए, मगर poor और middle class के लिए how do we raise and lend my voice also to that. Third is my mother got burned and she passed away. मुझे लगता है burn wards इंडिया में अच्छे नहीं हैं, बहुत ही and I'm going on record to say that. तो मैं चाहूंगी उसमें contribute करूं. और fourth, अगर women की तरह जिंदा रही और इतनी खड़ी हूं तो I can bullshit anything, but if I can little bit do create I don't even need money because I'm thinking of doing it sometime now, is a lot more opportunities, capital, scholarship for girls, especially coming from very difficult backgrounds. तो बहुत कुछ करना, and yeah, बस यही सब मेरे दिमाग में है, and I want to hopefully make this happen in the next couple of years. Fantastic. Definitely होगा, 100% होगा. And it's wonderful कि सारे पैसे के बाद आपने बस अपने लिए एक फार्मलैंड लिया और बाकी फिर से लोगों में ही बांट दिया. अंकुर, क्या फार्मलैंड हो सकता है ना हवाई में? वो जाने आने का खर्चा भी फिर बढ़ जाएगा. नहीं, वही मूव हो जाएंगे, वही रहेंगे. Awesome. Are you a mountains person or a beach person? I don't know. I'm split. What are you? You tell me. I'm a mountains person, hands down mountains person. Yeah, I don't know. I'm split. I like Goa also. I like Manali also. I like Gulmarg also. So it's difficult. Yeah, no, it is. I get that. Do you get time to travel? Go on vacations, like proper vacations, shut off and travel? I did the Vipassana was a test for me to do that. Last 2 years, so of course one couldn't travel, but I do travel because कहीं government से सब बुलाते हैं दूसरे देशों के, तो travel करती हूँ, and because I want to represent the cool India, so I do that. I'm looking forward in the next 1 year to travel more, make it part of my agenda. Awesome, wonderful. One last question: what would you pick between speed and perfection? Always speed.
Love it. Love it. Thus spoke the entrepreneur. टूटी फूटी गाड़ी चले तो सही. चलती रहेगी जब तक जिंदा रही, वो सबसे बड़ी गनीमत है. बट ये नहीं है कि परफेक्शन में गाड़ी ही नहीं कभी चलाई, निकले ही नहीं कभी घर से. That's so true. Wonderful. Thank you so much, Shradha. I have to repeat this because I genuinely feel it. Your work is commendable. You're making a big difference. Thank you for leading. Thank you for taking charge. You serve as an inspiration for a lot of people. So please don't ever, like अगर कभी भी किसी भी मोमेंट पे आपको कोई भी सेल्फ डाउट हो कि मैंने क्या ही किया है और कैसे ही कुछ भी नहीं हिला, then all you need to do is just go back to everybody who follows you, not because of just your story, but genuinely your own story and how you've navigated that. So thank you so much for everything. Ankur, before we shut, I want to say this. Thank you for saying this. I will do disservice if I don't call this out, that you are a very generous and a good man. And we in our country need more men like you. And I want to say this because हम जहाँ कहते हैं कि biases है, ये वो है. Thank you for giving me this opportunity, and thank you for being generous and kind. Because if we have more people, then we will have more women sharing their stories. Thank you. Absolutely, I would love to do that. Thank you so much. Thank you for calling that out and acknowledging. Pleasure. All the best with everything. अगले साल मिलेंगे आपके island/farm house पे, जहाँ भी वो होगा. And I'm sure it is going to happen sooner than later. आपके बीच में घी शक्कर. Okay. बिल्कुल. Thank you, Shradha. All the best. Okay. Thanks, Ankur. Bye. Thank you. Bye. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.